guest, a very special speaker today. For all of you, let me have this privilege to introduce her. I would like to introduce Ms. Rachna Bhusari, she is the Vice President of National Stock Exchange of India Limited, the world's second largest cash market exchange. She is responsible for all NSE India business development initiatives related to bourses listing of small and medium-sized enterprise SMEs. Ms. Bhusari holds a postgraduate degree in financial management and a bachelor's degree in commerce and law, and has approximately 2 decades of experience working with NSE. She formerly worked at the NSE in listing, investigation, member supervision and clearing corporation operations. Additionally, she serves as Vice Chair of the World Federation of Exchange SME Working Group. Ladies and gentlemen, here is the lady. Please welcome her with a huge round of applause, Ms. Rachna Bhusari. Start with the obligatory one, Namaste Tajurba, and a power-packed, man-filled room. Here it's nice to have a woman being called as a special guest to address a gathering. So thanks for having me here. Thanks for having me here. So I think prior to this session, Ajay, who is from Bombay Stock Exchange, gave some details of the SME platform. Considering that we have had a very long session, I would want to keep my talk short and explain to you how National Stock Exchange, the world's largest derivative exchange in the world for consecutive 3 years, makes a difference to the entrepreneurs in raising capital and growing their businesses. So again, good afternoon, and you've heard about me. I'm leading the fundraising team or the primary market team at NSE, and here I am to tell you how there is an alternate fundraising mechanism available to small and medium enterprises who wants to grow their businesses to the next level. Generally हमने क्या सुना है कि अगर कोई SME entrepreneur होता है तो उन लोगों का जो funding mechanism होता है, initially वो लोग अपने खुद के पैसे लगाते हैं, अपने घर वालों के पैसे से business start करते हैं, और जब उनकी growth काफ़ी substantial होने लगती है, उन्हें और फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली हमारा बैंकिंग सिस्टम काफ़ी निपुण है उनकी मदद करने में. बट एक लिमिट आती है जब खुद के फंड्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बैंक की लिमिट्स एग्जॉस्ट हो जाती हैं, कोलैटरल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या एंटरप्रेन्योर ये समझे कि मेरी जर्नी बस यहीं स्थित है, इसके आगे मैं बढ़ नहीं सकता? नो, दैट इज़ नॉट, बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर इज़ नोन फॉर द थर्स्ट that he has in himself to grow and grow his business. So this is where NSE Emerge platform, the name itself signifies what we are trying to do to the SME companies. Emerge them from their current status to the next status of growth. So this is where the NSE Emerge platform plays a very significant and a catalytic role. Here the SME companies can actually raise funds using the IPO mechanism and list onto the stock exchange. हमने हमेशा जब हम छोटे थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमने सुना था इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, उस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, और जब हम देखते थे तो बहुत फेमस ब्रांड्स होते थे, बहुत बड़े कंपनीज होते थे. कभी हमने ये नहीं सोचा कि अरे हमारे घर के पास जो एक छोटी कंपनी है जो मसाला बना रही है या जो पापड़ बना रही है, जिसको हम हमारे घर में रोज़ यूज़ कर रहे हैं, उसका क्यों आईपीओ नहीं आ रहा है. उसका रीज़न ये हुआ करता था कि 2012 तक आईपीओज़ के लिए, एसएमईज़ के लिए कोई अलग क्राइटेरिया नहीं था, और बड़ी कंपनीज़ के बीच में ये छोटी कंपनी अपना आईपीओ लाकर कैपिटल मार्केट्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि क्राइटेरिया काफ़ी स्ट्रिंजेंट था, रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पड़ते थे, तो उन्हें नहीं लगता था कि वो इस मार्केट्स में फंड रेजिंग कर पाएंगे. तो 2012 में एक अलग प्लेटफॉर्म बना, और उसी साल हमारी पहली कंपनी थेजो इंजीनियरिंग लिस्ट हुई, और उससे लेके आज तक हमारे पास लगभग 240 कंपनीज लिस्ट हो गई हैं. इन 240 कंपनीज का फंड रेजिंग अराउंड 3,600 करोड़ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन जो 2040 कंपनीज लिस्ट हुई हैं उसमें से 100 कंपनीज जो है
वो स्मॉल प्लेटफॉर्म से माइग्रेट होके मेन प्लेटफॉर्म पे चले गई है। तो जो एक किसी का एस्पिरेशन रहता है, जो किसी की एक ड्रीम रहती है कि हमें कैपिटल मार्केट्स पे ट्रेड करना है, हमें हमारा शेयर पब्लिकली लिस्टेड करना है, रिलायंस के जैसे हमारा शेयर होना चाहिए। आज 100 कंपनीज उसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करती हैं जहाँ पे रिलायंस, विप्रो या इन्फोसिस ट्रेड करता है। सो ये जो मान्यता मिली है इस प्लेटफॉर्म को और जो सफलता मिली है इस प्लेटफॉर्म को, वो सिर्फ इससे नहीं है कि मेरे पास कितनी कंपनीज लिस्ट हुई हैं, वो इससे प्रूव होता है कि ये कंपनीज कितनी ग्रो होके फाइनली दे आर एबल टू कम्पीट एट द मेन बोर्ड विद द लार्जर कॉर्पोरेट्स, विच इज़ एन एस्पिरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रमोटर्स अक्रॉस। What it takes to list on SME, I think अजय ने बहुत स्पेसिफिकली थोड़ा सा टच किया था। NSE की क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। It is about 3 years of track record, 2 years of profitability, and obviously a better governance norms, I would say. Not very strict governance norms, but good governance norms is what would the requirements be. It's very simple to list. You had to hire an investment banker who would walk through the process with you, and throughout this process, NSE will walk the path with you. That's a commitment that we have shown to all our 240 companies, and they will be obviously seconding to what I am going to be telling you today is that it's obviously very, very advantageous to be listed on a stock exchange for the simple reason that stock exchange brings a lot of credibility to their business. They enjoy a lot of visibility across their peers the moment they are a listed entity. And I think, being listed on the world's largest stock exchange, which is in the derivative segment for 3 years, obviously brings a lot of pride. So that's where National Stock Exchange is here to tell you that yes, if you are a 3-year-old company, you have profits out of 2 years, you are on a, excuse me, you are on a growth path. Thank you so much. You are on a growth path, you already have a sustainable proven business model. Yes, there is a platform available for you. Obviously, your bank funds are there, but don't ever think that this is a replacement to your bank fund. This is only going to be complementing your bank funds, because the moment you have bank funding, you're able to infuse more of equity funding, and the moment you have more of equity funding, you're able to infuse more of debt funding into it. So it's a very, very complementary role that an equity markets play into this capital markets. And the journey is not difficult at all. We have seen a company जिसने अपने मन में बात ठान ली कि मुझे लिस्ट करना है और वो 100 दिन के अंदर लिस्ट हो गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म इतना सरल है और इतना सिंपल है, अगर लोग अपना मन बना ले कि हमें लिस्ट करना है, और लिस्ट करने के बाद किसी ने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हाँ मैं कहाँ फंस गया, ये तो मैंने आज तक नहीं सुना। बस ये सुना है कि अच्छा हुआ हम लिस्ट हो गए, अच्छा हुआ हमने ये कदम उठाया, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ा पर वो मेरे लिए अच्छा रहा। मुझे आज बैंक के साथ डील करने में बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि मैं लिस्टेड कंपनी हूँ। अगर कोई पॉलिसी एडवोकेसी की बात कर रही है तो सबसे पहले लिस्टेड कंपनीज़ को बुलाया जाता है सरकार की तरफ से कि आप बताइए आपको क्या लगता है, आपके लिए बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है, जो पॉलिसी चेंजेस होते हैं उसमें उनके लिए उनका सहयोग मांगा जाता है। सो दिस ऑल हैपन्स बिकॉज यू आर अ लिस्टेड एंटिटी। जैसे सब जानते हैं भारत में करोड़ों SME हैं, बट उसमें से आज की तारीख में हम लोग सिर्फ 700 लिस्टेड है। That goes a long way to say that there is a huge path that SMEs have to cover, and NSE and BSE both put together are really committed. We are actually committed to help SME entrepreneurs understand this alternate fund mechanism, make themselves prepared for this funding mechanism, because it doesn't come in a day. You need to really work towards coming up with an IPO. You have to really put your organization structure in place ताकि आप एक IPO लायक कंपनी बन जाएं। और एक बार जब आप फाइलिंग कर देते हैं, आप लिस्ट हो जाते हैं, तो इट्स नॉट दैट यू गेट बॉग डाउन बाय कंप्लायंसेस। जो कंप्लायंस क्वार्टरली हुआ करते हैं मेन बोर्ड पे, वो SME की समझते हुए कि उनकी सक्षमता कितनी है, उनकी तैयारी कितनी है, उसको हाफ ईयरली किया गया है ताकि वो भी उनके लिए मुसीबत ना बने, उनके लिए आसान रहे। सो लॉट ऑफ रिलैक्सेशंस हैव बीन गिवन, ऑनरस नहीं है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, इट्स नॉट अ एक्सपेंसिव अफेयर एट ऑल। सो आई थिंक देर आर मल्टीपल एडवांटेजेस, इट्स जस्ट अबाउट यू टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ, believing that there is an alternate funding mechanism which you should explore and go for it. I think 240 companies have benefited at NSE, and there's nothing stopping you to think about it and take that leap of faith. Thank you so much.
Thank you, Rachna madam. Thanks for accepting our request with just a phone call. And more important, you supported the event also to this great extent. And thank you to BSE also. This is the platform, madam, we can assure there are 1,500 SMEs who are eagerly looking for the listing. All are from 1 crore to 100 crore turnover. So your guidance will help them in getting that decision faster. So thank you very much.